Us on stage. Yeah, should we sit? Yeah. First, photo. पहले photo. Group photo. Let's get around that. Thank you. Thank you. Thank you. Should we sit? Yeah, there's a chair. That's it. टाइगर श्रद्धा, आप दोनों में सबसे ज़्यादा रेबल कौन है और सबसे ज़्यादा किस बात के लिए आप बागी बन सकते हैं असल ज़िंदगी में? I think टाइगर इज़ डेफिनेटली बहुत ही बड़े रेबल है टाइगर, क्योंकि इन अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव वे जिस तरह से ये फोकस्ड रहते हैं जो ये करते हैं। आई मीन आप सबने ट्रेलर में देखा है कि किस तरह के रिबेल है ये, तो डेफिनेटली टाइगर इज़ एन अमेजिंग रिबेल, आई वुड से। जी बागी हूँ मैं एक मकसद के लिए, पर I'm not not just Hi. like that. Actually हकीकत में I'm really not much of a बागी, पर जी कोशिश करता हूँ मैं whatever I believe in, to stand firmly by that, and even if that means I have to be a बागी for it, तो ज़रूर जी इस मामले में I can be a बागी, yes. प्रोमो देख के यार एनर्जी आ गई, ऐसा लग रहा है कि तोड़ फोड़ देने का दिल कर रहा है। इट्स लाइक दैट। गलत बात है सर। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि दूसरी फिल्म आ रही है 2 साल के बाद, लेकिन 2 साल इतना बड़ा गैप, क्योंकि आपने डेब्यू किया था 2 साल पहले। हाँ जी। जब कोई न्यू कमर आता है तो लगातार 3-4 फिल्में उसको मिल ही जाती हैं तकरीबन 2 साल के अंदर। बिल्कुल। सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? I was just not in a rush, sir. I thought हीरोपंती में मुझे बहुत प्यार मिली है, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि I've got acceptance so early. So keeping that in mind, एक expectation है मुझ पे, एक उम्मीद है मुझ पे अभी. So I think the second film is as important or maybe more important than the first film. So I just wanted to make the right choice and take my time, and thankfully my producer, my director, gave me that time to prepare for this और वो film. नतीजा आप देख रहे हो इस ट्रेलर में। श्रद्धा, ये सवाल आपसे मैं पूछना ही चाह रहा था कि मतलब आप अपने आप को लकी मानती हैं कि जितनी भी फिल्में कर रही हैं लगातार हिट दी जा रही हैं, तो ये तो गारंटेड है कि पीछे वाले नॉइज से आपको पता चल गया होगा कि ये भी सुपर डुपर हिट है? फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सो। आई थिंक सबकी उम्मीद, सबका विश यही होता है कि जो भी फिल्म वो करे वो हिट बन जाए और ऑडियंस जाके देखे। तो आई डेफिनेटली होप कि दिस वन ऑल्सो लॉट्स ऑफ पीपल गो एंड वॉच इट और सबको मज़ा आए आफ्टर वॉचिंग इट। दैट्स ऑल आई होप फॉर। Thank you so much and wish you all the best. थैंक यू। Shraddha, hi. Hello. Shraddha, we saw you learning, all the moves for ABCD2. You dance so well, and now we see Thank you. you are breaking your bones. Breaking bones, My literally. bones? Not I'm your breaking my bones? You mean other people's? Other people. How was it? How has the journey been? I mean, doing, all this, taking all the. All trying to do what Tiger can do. Yeah. Basically. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, कुछ अलग करने को मिला। साबिर सर ने कहा कि इस फिल्म में you have to do some action, and that's the part of the character. And of course when you have Tiger with you, then you get all the tips, वो tips मिल जाते हैं और वो encouragement मिल जाती है। बहुत मज़ा आया, और उम्मीद है कि people like the effort that I've put in. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Tiger here. Hi. आपके फादर ने भी बगावती तेवर दिखाए थे अपने जमाने में हीरो में। और अभी भी दिखाते हैं। नहीं और हाँ, और आपने भी इस फिल्म में, आपने जो अपनी शुरुआत की फिल्म में, हाँ जी, उसमें भी बगावती तेवर थे। कोशिश तो करी मैंने। हाँ जी, थैंक यू। जहाँ तक एक्शन की बात है तो एक्शन में आप उनके भी बाप निकले। लेकिन एक्सप्रेशन में आपके फादर
को आप बीट नहीं कर पाए। नहीं नहीं कोई टक्कर में नहीं है उनका। तो आप ज्यादा बेहतर बागी किसको मानते हैं, अपने पापा को या अपने पापा, को? हैंड्स डाउन पापा, कोई कंपैरिजन नहीं है जी। जी, और दोबारा इसी टीम के साथ जुड़ने की कोई खास वजह? किस्मत अच्छी थी मेरी। थैंक यू। थैंक यू। Tiger, like in the trailer looks amazing. Yeah. Priyanka from India Forums. Hi. The trailer looks amazing. Thank You're you. both fabulous in Thank the you. trailer. Thank We have seen you, pack some good powerful punches. So in real life, कभी किसी को धोया है ऐसे? नो बिल्कुल नहीं, आई एम द टोटल ऑपोजिट। real life में Tiger is the total opposite of what you guys see. He's Never in college days or नहीं, actually in the story क्या, actually I used to get bullied a lot, but I used to never let anybody win क्योंकि I'm a very fast runner, तो हमेशा भाग जाता था। Shraddha, you looked absolutely stunning in the bikini on screen. Was it difficult convincing you to don one? And secondly, how difficult was it attaining the bikini? attending. Oh, thank you so much. Well, it's a first time for me, पहली बार। तो हमने एक क्राबी में शूट किया था। बहुत बहुत मज़ा आया। It was a really beautiful sequence and yeah, I hope that people like what they saw. आपने भी compliment pay किया. Thank you so much for it and I hope everybody else also thinks that. This kind of action actually reminds us of the superhero flick that's coming out at the end of this month, Batman vs Superman. Who are you rooting for, Batman or Superman, and why? I'm rooting for Tiger. टाइगर फिल्म में तो आप श्रद्धा के लिए बागी बने हो, बट रियल लाइफ में आप किसके लिए बागी बनोगे या बने हो? श्रद्धा के लिए। श्रद्धा के अलावा शायद मेरी माँ, I think for my mom, yeah. So since the film is releasing in April and there's another film releasing alongside, so what sort of release are you planning for Baghi? Well, we're planning a very wide release, and the good part today is that all kinds of films can coexist. So there's no issue with two films releasing on the same day. I mean, as long as the film is good, I think we are nowadays in a time when people want to watch good movies. So they'll watch both if both movies are good. And will it have a wide release even overseas? Yes, it will be a wide release around the world. बहुत रेयर होता है ऐसा कि ट्रेलर्स में कोई भी सॉन्ग नहीं दिखाया जाता, तो ये उनमें से एक ट्रेलर है। तो व्हाट अबाउट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म? There are 5 really talented composers who've come together for the film. I take a lot of pleasure in making the music for the film, and I'm assuming and I'm hoping that you will enjoy the music. There's a lot of romance in the film, and I assure you that the music is really good. श्रद्धा, एक गीत आपने भी गाया है इस फिल्म का अरमान मलिक के साथ, शायद। तो आप वो थोड़ा हम करना चाहेंगे हमारे लिए? अभी नहीं। फिर कब? थोड़ा इंस्टॉलमेंट्स में हम आपको दिखाते हैं ना, एक के बाद एक। Can we say that the Lara Croft for India has arrived? I don't know. Like, you guys will have to see it and decide that. And Tiger Sabir said a while back that you're also good in romancing. So how was it romancing your childhood friend? It was very easy because I was very comfortable from day one around Shraddha. बचपन से हम दोस्त हैं. I think we've been in the same school. I've been a fan of Shraddha since her very first film. I've been a fan of his since ये स्कूल में थे और he used to play basketball with so much passion. मुझे याद है कि टाइगर अपने बास्केटबॉल जर्सी में हमेशा रहते थे, fully energetic and always like focused, and of course now you can also see that he's focused in what he's doing now. It's great. बहुत मज़ा आया. Can I finish? Sorry. This is my question. So anyways, I was just very comfortable from day one. I remember the workshops when she used to come and Sabir sir used to take our readings. It was just, we used to have such a fun time just reading. And I think the romance in our film is quite strong. It's quite a strong element in our film. And she never once, felt uncomfortable or made me feel uncomfortable at all. And we were just always having fun and laughing. And just every time Sabir sir would say action, we would be in the zone. And every time he would say cut, then we'd just be having fun dancing or something like that. So yeah, it was fun working with her overall. We were actually like
can you believe it? We're doing a movie together now. Because when you go to school with someone and then you grow up, and then of course both of us, when you have a dream to act, and then you end up acting with someone you've gone to school with. So it's really surreal. So pehle din se last din tak, we would be like, in between shots, we would be like, Tiger, can you believe it? हम एक picture कर रहे हैं साथ में. And he'd be like, Shraddha, I can't believe it. And so we were very excited to be working together. It's not a remake of any film. Just to put you correctly. All right. Thank you so much. One more Thank thing, you guys. one more. Thank you guys. One more. We love. Baghi is not complete without the music, and we would like the NG and Bhushan ji. Bhushan ji, please.